शामदीद नया दौर लाइफस्टाइल में मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत स्पेशल शख्सियत सलमान पीरज़ादा। सलमान रिसेंटली जॉयलैंड में उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है और उससे ज़्यादा आई टेल यू कि सलमान पीरज़ादा के साथ आई वर्कड इन अ थिएटर एज़ वेल और थोड़ा-सा उनके साथ मैंने थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी की है फ़िल्म पर। तो सलमान साहब जो हैं उनके पास ही हैज़ अ वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द क्राफ्ट, अबाउट एक्टिंग। तो हम उनसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उस पे डिस्कस करेंगे। तो सलमान साहब थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वेलकम टू थैंक आवर यू। शो। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान साहब सबसे पहले जॉयलैंड का एक्सपीरियंस कैसा था और जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में हमें बताएँ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज आई लाइक साइम अ लॉट, दैट्स व्हाई आई प्राइमरीली agreed to work on the film. और कास्ट अच्छी थी, क्रू फर्स्ट क्लास था, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एवरी वाज अ यू नो वी ऑल वर्क वेरी हार्ड, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे थे लोग, विच इज़ नाइस टू सी gifted people. And Sarwat, of course, was one of the producers, and so it was pleasant. You know, काफी मेहनत से फिल्म बनाई थी। आपका कैरेक्टर जो है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ राणा फैमिली। आपका जो कैरेक्टर है वो ही इज़ द हेड ऑफ द राणा फैमिली और उनका जो बेटा है वो उसके गिर्द ये कहानी घूमती हाँ, है। या सो आपका कैरेक्टर कैसा था? उसकी आर्क कैसी है? वो उसके बारे में थोड़ा बताएँ। character is like so many of our elderly people, but sort of patriarchal, sort of you know अपनी मर्जी कराने वाला बंदा, बाप, oppressive, partly not listening to the newer generation and so on and so forth. अपनी वैल्यूज पे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑल टुगेदर। तो सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग फिल्म की कहानी के, बिकॉज दे रियल, आई मीन लाइक उनकी इंटरचेंज आपस में सबका इज इंटरेस्टिंग। हमने ट्रेलर देखा है एंड वी आर हाँ, रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द मूवी। हाँ, हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं पिछले वीक्स में कि कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो कि रूटेड हो, आपकी जो कल्चर है, आपका जो शहर है, इलाका है, जो मुल्क है, उससे वो तो वो फ़ील आती है वो ट्रेलर देखकर। हाँ, तो हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे। हाँ, आई एम हाँ, वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो इसी बारे में देखें आपका जो कैरेक्टर, आई नो यू पर्सनली, यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस और ये जो करैक्टर है ये एक और तरीके का बिल्कुल अपोजिट टू या योर्स। तो जो देखने वाले हैं, जो यंग एक्टर्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा बताएँ कि करैक्टर को अप्रोच कैसे किया जाता है वन्स यू हैव सच अ चैलेंज जो कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल अपोजिट हो, तो किस तरह उसको कोई भी करैक्टर हो, उसको किस तरह अप्रोच क्या एक अच्छा करैक्टर निभाने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई मीन माइंडसेट तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो फिल्म के अंदर खास तौर पे, आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यू सी, because otherwise you're fighting हुँ। with the idea of the जो बंदा फिल्म बना रहा है उसने काफ़ी सोच विचार की हुई है, लेबर की हुई है, सोचा हुआ है क्या 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 नहीं करना, क्या कैरेक्टर है, सो राइटर डायरेक्टर इन दिस केस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड व्हेन आई एम एक्टिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज की हुई हैं लाइफ में, बट आई एम मल्टी काइंड ऑफ I'm a cinematographer and director and whatnot, so on. So I forget about that. I'm just an actor. I'm acting. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आई हैव टू एक्चुअली पुट दैट अक्रॉस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। अगर मुझे कोई चीज़ स्ट्राइक करती है इंटरेस्टिंग, आई कैन मेक अ सजेशन कि भाई ये ऐसे 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 है। बट इन द केस ऑफ दिस यंग मैन, Saim is a very together person, intelligent man. I liked him very much, and उससे काफ़ी फोकस से और केयर से फिल्म बनाई, विद अ गुड हार्ट। आई मीन इज अ गुड गाय बेसिकली, विदाउट एनी एजेंडाज कि इसको प्रमोट करना, उसको जो लोग बकवास कर रहे हैं।
And my work generally is, I've many both, over the years, uh, I mean, I've done a lot of acting jobs in England mainly, because a lot of British television, films, etc. So consequently, when you're doing a lot of TV kind of stuff, you're working with endless directors, and good ones, bad ones, etc., etc., etc. So, but like, when actors create problems, थोड़ा सा नाम बन जाता है वो problem create करते हैं, that's bullshit. I mean, it's very important because film is a teamwork. ये एक बंदे की चक्कर नहीं बनता. You need to have a team, you're a well-oiled team, everybody should be in sync. तो एक बंदा अगर इश्यूज बनाने लग जाए तो वो फिर मसला बनता है सारों के लिए, you see. So that's why you have to actually be focused. You have to actually kind of like um, uh, जो दूसरे एक्टर्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, you have to be very very kind of like cooperative with them. तो वो आपने जो डायरेक्टर हैं जी, इस मामले में यू योरसेल्फ इज अ डायरेक्टर, Yeah. तो ऑब्वियसली आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल अपनी जगह कायम रहता है, बट व्हेन यू एक्टिंग तो आप फिर डायरेक्टर्स एक्टर जिसको कहते हैं कि डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके और उसकी बात सुने और उसकी बात माने और उसके मुताबिक फिर आगे No, लेके because it चलें। helps, It you helps. know. तो कोई भी जो अब रीजनेबल डायरेक्टर है ना, वो कभी भी अच्छी सजेशन को डिनाई नहीं करता. So if an idea strikes you, say, you like do it like this and do it like this and do it like this. तो वो उसको समझ में आ जाए बंदे को, वो कहेगा ये go ahead and do it. डायरेक्टर्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी. There are a lot of who are directors, and there are a lot of good ones. And this guy Saim is a good one. He young guy, सीख रहा है, he's got a good life ahead of him. But he's done a good job, and people should be very happy that we have this kind of talent in Pakistani film industry. Absolutely, And so it's तो ये मुझे लगता है कि एक जब डायरेक्टर ने अपना काम किया हो तो एक्टर्स की जिंदगी आसान हो जाती है, of course, और फिर इट्स इजी टू फॉलो दैट डायरेक्टर. yeah. बट आई एम श्योर यू बीन टू डिफरेंट सेट्स जहाँ पर कि डायरेक्टर शायद उतना प्रिपेयर्ड नहीं होगा या वो चीजें उतनी नहीं, नहीं अच्छी मैंने होती. एक दो उस डायरेक्टर्स इंस्टेंस के में फिर क्या साथ करते हैं? शुरू में, मम्मी अर्लियर सबसे पहली जो फिल्म मेरी लाइफ में मैंने जैसे काम किया था, जी, I think 17 years old or something like that. राइट. 17, 18. And I was directing my first play at the Arts Council, Al-Hamra. ओके. वो ये जो एक अजीब सी जू लाइक बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे, it was not that. It was a very beautiful space, huge big old house, and lots of चिनार के दरख्त बड़े बड़े और बड़ा बाग शाग उसके इर्द गिर्द. It was a very pleasant place. And वो वहाँ पे होती थी वो आर्ट्स काउंसिल थी, वहाँ पे स्टेज था, स्मॉल थिएटर एंड सो ऑन. सो इट वाज ओपन एयर थिएटर. नहीं वो छोटी सी बिल्डिंग, स्मॉल थिएटर इनसाइड बिल्डिंग के अंदर बना हुआ. राइट. उसके अंदर आई थिंक मेरे बाप ने वो बनवाया था. And Faiz Saab was the secretary of Arts Council. Right at the time. So so it was a very pleasant small theater. पुराना घर था ना, बड़े बड़े घर, जी जी जी. तो उसकी स्पेस बड़ी थी. Anyway, so वहाँ पे a French crew was working here making a movie, and they came to hire me as an assistant, because I was like in college play and this and that and the other and doing my own production. And वो मुझे अब they hired me as an assistant. So a couple of days afterwards, they actually screen tested me and they gave me the lead in the movie. Okay. So that was the first movie I made. I've never seen that film. आधी से ज़्यादा फिल्में जो जिन पे मैंने काम किया मैंने देखी नहीं आज तक. अच्छा. I've not seen all of the stuff that I've actually worked on as an actor. Why is that? And so वो मेरी पहली फिल्म थी. Okay. अच्छा, वो कान में रिलीज हुई थी, काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी. उसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, they became very big names. I mean, Serge Bourguignon, Claude Lelouch, the very famous filmmaker, उसकी Man and a Woman,
was an amazing movie in the early 60s. तकरीबन revolutionized filmmaking, different style के अंदर, Right. like and things like that. तो एक मैंने फिल्म की थी पाकिस्तान में, my first Pakistani film with a director from Bombay. Bombay he was very successful in Bombay, and he made very successful films. He was a lyricist, famous Nakshab Jarchivi, and he's made a very famous film called Zindagi Ya Tufan, something like that. Okay. नूतन एक एक्ट्रेस होती थी इस माने बड़ी मशहूर बम्बई की, ब्यूटीफुल वुमन sort of thing. Shush. And वो उसने, I mean, he was a very good producer. He was producer, writer, director. Right. And he paid me very good money as a young kid, things like that. और दूसरा ये है कि कभी मुझे उस ज़माने में स्टाइल फ़र्क होता था, you know, like I used to, as a kid, go to film studio sometimes with my dad and so on. And तो मुझे याद है वो moments सारे. And I did that movie. उसके अंदर the Mr. Jarchivi's directorial abilities were kind of highly questionable. तो उसमें एक फिल्म का नाम था फानूस, शैंडलियर. उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा शैंडलियर लगा होता है, ऐसे उसके ऊपर एक बड़ी वो सेट बने हुए, सेट उस जमाने में जो बनते थे उन स्टूडियोज. एंड nobody knew the story because there was no such thing as a script. वो must have been somewhere because वो दो dialogue लिखा जाता था. अच्छा. And so then Ilyas Kashmiri materialized. मैं कोई 18 साल का बच्चा था. Ilyas Kashmiri, mashallah, was a big guy and much older than I was and so on and so forth. तो वो डायलॉग में आता है कि ये मेरा छोटा भाई. मैंने कहा कि I mean, my younger brother. So Ilyas Kashmiri was your younger brother? Yeah. मैंने कहा Jesus, what? ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा बस आप करते जाए. अच्छा करते जाए, whatever, like I mean. And वो मोमेंट आया कि वो जो मेरा छोटा भाई है जी, हम गए वहाँ पे लोकेशन पे in Murray somewhere, and I came out of the thing and the van and looked around at the location. उधर कोई 6-7 apes खड़े हुए इस तरह से खड़े. Okay. Obviously, they were not real apes. They were kind of men who dressed in ape costumes, जो कि वो Halloween के लिए मिलते in various cities in the United States, in the old days. I don't know what they sell now. Various characters, spooky things and so on. I don't know what the fuck's going on. वो क्या हुआ कि मुझसे कहने लगे कि ये आपके भाई के फ्रेंड्स हैं. Oh my God, plot thickens real fast. Oh, अच्छा एक तो छोटा भाई है, younger brother is friends with apes. Friend with ape. With not just that, वो खुद ape बन जाता है. अच्छा. He transforms into an ape. Okay. For some obscure reason which I have not understood since that day. It was way back in time. मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि यार वो बंदा एप क्यों बन जाता. बाहर सूरत वो एप बन जाता. Then there's a girl involved, obviously there's love involved. I'm in love with her and she's in love with me, and then the brother is actually very jealous, so he turns into an ape and wants to take revenge or something. But वो मुझसे कहने लगे कि ये जो अब तुम्हारा जो भाई है तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तो इसने ऊपर से शैंडलियर काटना है. Okay. और वो तुम्हारे ऊपर गिरेगा. Right. I thought, okay, fine. I'm sitting under the chandelier and it's covering, and पूरा एरिया उसने कवर किया शैंडलियर में. ऊपर देखा, मैंने कहा यार ये मैं तो नहीं निकल सकूंगा इसके नीचे. I do not possess before he calls cut, I might not be alive. cut कैसे करना है.
कि जी वो उसको बचाना कैसे, कि सेट बना हुआ है एक महल का, राइट, और उसकी बैल्कनीज है जिस तरह होती थी पुरानी ऑफ बिल्डिंग्स के कोर्स, अंदर, यस, लाइक यस, बड़ा सा सहन है, और यस, वो यस। बैल्कनीज बनी है, रस्सा बांधा हुआ है उसको, शैंडलियर को, विच इज मेड ऑफ स्टील बाय द वे, ग्लास, रियल ऐसे करके लटका हुआ है। और वो उधर से मजदूरों ने रस्सा पकड़ा हुआ है ऐसे करके, ताकि वो गिरे जब ना। ऐसे ऐसे होएगा उसको हाँ, काटेंगे फिजिकली, ओके, तो वो उसको ऐसे किसी हुक के अंदर से ऐसे ऐसे करके रिलीज करें। अच्छा। आई मीन आई न्यू दे वुड कम विद द chandelier because on the floor and get messed up, which No, is but what. what was your escape Yeah. plan? So I just kind of, it just shook, and I jumped, and I just, I was out, You ran and away. that damn chandelier came down, Yeah. and the people who were trying to hold it, they came with it, and it was a bit of a chaos. And there were few cameras, and the director came and said to me, "You're a coward." He said, "I said, I agree. I mean, I am not going to be a hero for your benefit." No, but he expected you to stay there under Yeah, the yeah, yeah, yeah. chandelier? Stay there कि वो काट के जब गिरना शुरू हो जाएगा, हाँ. तो फिर आप निकले तो वो Then तो it's covering half the room, उसका जो diameter है सारा, yeah, of the half the stage, yeah, sound stage, yeah. तो निकल ही नहीं सकते. Wow. So like that experience, and I thought fine, that's, and I actually started working on a movie. So, but Salman sir, इसका तो मतलब ये हुआ कि if the director is not competent enough, he or she can actually endanger your life. Well, I mean, yes, I mean there are directors like that, but mercifully not these days, because like this zamana bahut change ho gaya. Sorry, I mean, you look at the like the old movies, the silent films. I mean, I'm very kind of like fortunate. I actually uh, basically I always say I started work in the British industry and the American industry, because यहाँ पे industry मैंने काम ही नहीं किया. And one French movie and this movie and another movie which never got completed, etc. But मेरी actual जो career बना था वो England में था, जी, from the scratch. जी. And that was a very difficult time. It was a different time, totally different time. It was 60s, बहुत ही फर्क. अमेरिका भी बहुत फर्क था 60s में. Just kind of you're like Hollywood was like a village. Now Los Angeles is kind of spread, like it's like overpopulated, and all kind of like the whole thing has changed. People have changed, but the thing is this: that I was in the industry in the last years of the golden age of the studio system. Wo, I'm very kind of like I experienced that. I mean, I worked with people who made Hollywood with their own hands physically. You see, and they'd not been to film schools. None of them had been. No directors and things like that. They'd learned their work on the job, and they actually developed technology. The technology, basically, filmmaking mein, not developed by some technical house. It was developed by filmmakers, because like कि भाई ये काम नहीं कर रहा. जी, जी, जी. Lens, let's try to figure out this light काम नहीं कर रही. Yes. So it just went and on the job development. Yes. And They had a then certain vision, and obviously yeah, इसको yeah. So implement करने के लिए. it's fascinating Yeah. business. Now the whole thing is very different. People like me who had the journey from that time into this time, मेरे लिए it's just the progression of things. Like just kind of like सामने ही चीजें होती रही हैं. You've seen it all. Yeah, and I'm still seeing it, because Yeah, of like course. अभी इसने आगे जाना है और आगे changes होने. लेकिन ये देखिए ना सलमान साहब, this brings me to my next point and question, because we interviewed Ahsan Rahim, who directed Latifa in Trouble, Ali Zafar की जो मूवी थी. हाँ. तो Ahsan was saying कि वो कुछ स्टंट्स करना चाहते थे, बट ही सेड कि पाकिस्तान में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है.
तो उन्होंने जो एक स्टंटमैन था उसके साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ, उसने कुछ अपना सिस्टम रखा हुआ था, उन्होंने किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर लिया, बट द विजन ही हैड वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, वो कर ही नहीं सकते थे पाकिस्तान में रहकर। वो ज़ाहिर बात है फिर आप बाहर से मंगवाते हो लोगों को, वो बजट कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री जो है सलमान साहब, ये इसको किस तरह एक इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, मैं तो ये कहता हूँ कि नज़र तो आती नहीं है, मतलब ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टूडियोज दो बेड़ा तीन गर्क वजह हो गए देखे हैं। ना, पार्टीशन से पहले, not that long ago, in actual fact, if you think about it, it's a very short time ago, 1947. Uh, it was India. So Bombay was the big center, filmmaking का. सारे लोग उधर जाते थे. Or except, with the exception of Bengalis and Tamil people, because they had their own industries. So Lahore was a very important place in for the Indian movie industry. Because इधर ये जो शहर था, ये was a university town. यहाँ पे लिटरेरी लोग थे, यहाँ पे हर किस्म का मिश मैच था, सारे हिंदुस्तान से लोग आते थे लाहौर में. Lahore had this kind of magic culture and things like that. So it was a great testing ground. तो ये फिल्म जो यहाँ पे चलेगी, सक्सेसफुल हो जाएगी लाहौर में, वो सारे हिंदुस्तान में उसका वो सेट रहेगी, basically something like that. And very interesting story, I'll tell you, like in between, very quickly, about my dad's story. My dad said to me, this is not connected with this, but in brackets. Okay. But like मैं जल्दी से बता देता हूँ. डैड ने मुझे स्टोरी बताई कि लाहौर में स्टूडियोज थे पुराने, ये जो बाद में शाहनूर बना, फिर ये अपना ये किधर आप कहते हैं, नहीं ये तो बाद में बड़े रिसेंट, बहुत रिसेंट. शाहनूर वाला स्टूडियो था. देन ये जो आपकी मुस्लिम टाउन पे वो जो ब्रिज है, वहाँ पे 2 स्टूडियोज थे पुराने, प्री पार्टीशन स्टूडियो. फिर ये माल रोड पे जो नहर है, वहाँ पे आजकल मदरसा है एक बहुत बड़ा सा, आपको नजर आता है. दैट वाज अ मूवी स्टूडियो. वो पुराना पंचोली स्टूडियो था, प्री पार्टीशन वाला. एज अ किड आई वर्क देयर. फ्रॉम कॉलेज में हम काम होता था. After college time, I used to assist the director called Mr. W. Z. Ahmed, Fareed Ahmed's father. And so ये 2-3-4 स्टूडियोज थे पुराने, जहाँ पे फिल्में बनती थी काफी. वो ये पंचोली का था, वो भी उधर थे. And so my dad had just come from Europe because जंग शुरू हो गई थी. And he had actually worked in Europe with Max Reinhardt and that kind of stuff, and Bladenberg's film studio, Ufa Film Company, and so on and so forth. Ye was actually had gone to see Mr. Pancholi. तो डैड में ये कहते हैं कि मैं बैठा था वहाँ पे, जाके पंचोली साहब बैठे हुए थे, सिगार पी रहे थे. तो वो एक्टर था, वो खड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो उसको पीछे से उसकी ट्राउजर थोड़ी सी नीचे की, उसको छांटे को मार. And Pancholi was very sitting calmly and watching this thing happen. And Dad said he was just kind of like, he couldn't figure out what's going on. तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? If I may ask. He said this actor has no expression. I'm trying to put some life into it. Can you imagine this? I'm trying to get a reaction out of him. ताकि ये कुछ रिएक्ट कर सके. भाई उसको आप किसी और को कास्ट कर लें. Wow. But I mean, मतलब डायरेक्टर की था. People like Cecil B. DeMille in Hollywood on the other side. वो गन लगाई होती थी. अच्छा. तो यार गन का क्या काम है उसके ऊपर? So while directing, he would have a gun. Yeah, I used to quite a lot of the time. I used to work for a very successful American director called John Frankenheimer. And उस ज़माने में 70s में a lot of the big Hollywood movies were made in Spain. क्योंकि CGI होता नहीं था, और जो डॉलर प्राइस थी वो, Spain was not part of EEC. Okay. So the US companies used to get a very good bargain out. Yeah, great deal. So they could make big sets and all that kind of stuff. Hire a whole bunch of people. And there were a lot of
चीज़ें तो लाइक 2-3 शॉट्स के अंदर he took out a revolver and the thing of close up of an actor he went I said, excuse me, John. I said, is that a 45? And you're like, yes. I said, why? He said, just a reaction from this guy. Oh my God, on the set. Yeah. Okay, wow. But I mean, the thing is this, कि सारी की अभी आप देखें इसकी साइलेंट मूवीज देखें How far we बस्टर कीटन की Salman साहब, उसके आपने देखे हैं उसके स्टंट्स बस्टर कीटन नहीं, वो सारे खुद करता था. I mean, you know, like if you just watch 2 of his movies or 3 of his movies, your little excerpts भी लगे हुए हैं YouTube पे बहुत सारे. So, you know, boggles the mind how you can do those kind of things. वो बिल्डिंग से गिर रहा है नीचे. तो स्टंट्स की बात की थी, स्टंट्स का मसला डेवलप ही नहीं किया ने. यहाँ पे प्रॉब्लम रही. यहाँ पे जब वो हो गया, यहाँ पे फिल्म बनती थी बॉम्बे टाइप. काफी देर तक ये मुल्क रियलाइज ही नहीं कर सका कि व्हाट आर वी, हमारा कल्चर क्या है, हम कौन है, ये इस कॉम्प्लिकेशन में रहे. नहीं, बॉम्बे टाइप से क्या मुराद है? वो मसाला मूवी नहीं, बॉम्बे मूवी डजंट रिप्रेजेंट इवन द रेस्ट ऑफ इंडिया. राइट. आई मीन आपने वो तमिल मूवीज देखें, बंगाली मूवीज देखें, वो पूरा हिंदुस्तान तो बम्बई नहीं रिप्रेजेंट करता ना. वो अजीब ही उन्होंने सर्कस बना दिया. एंड उनकी लैंग्वेज फर्क है, उनका सारा कुछ. वो हमारे लोग भी वैसे ही बोलते. जब थोड़ी सी आवाज भारी करके बॉलीवुड डायलॉग, बॉलीवुड बजूकास, टफ गाइज एंड थिंग्स लाइक दैट इन मूवीज. एंड द थिंग इज के ये आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सके कि कल्चरली हमारा क्या प्रॉब्लम. Yes, that's so true. भाई ये हाँ, ये हिंदुस्तान में वो भाई व्हाट इज, आई मीन कल्चर को आप कैसे कार्व करेंगे. Culture is not a static situation. Yes. It is a developing situation. It grows and things like that. Fine. अब जाके 70 साल के बाद पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा सा फर्क हुआ है, बिकॉज उधर से वो दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है, एक्सेट्रा, ये उनके दुश्मन बैठे हुए हैं, एंड द कॉम्प्लिकेशंस. बट इन दिस कल्चरल कंफ्यूजन took heavy toll on not just the film industry, but I think all kinds of arts and things. ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा कल्चर क्या है. True. Which is, you know, which is weird. दूसरी बात ये है कि फिर फिल्म मेकिंग का स्टाइल वही रहा चुके हिंदुस्तान में, बम्बई की फिल्म मेकिंग का स्टाइल. राइट. देन द गवर्नमेंट कंट्रोल. यहाँ पे मुझे याद है when I was a kid, I remember that because my cousin, who is much older than I am, he's died now, and he was a federal secretary, so on and so forth. वो हमेशा government job. He was the controller of film raw stock. यहाँ पे ये बड़ा एक photography wise, for instance, cameraman from here like Raza Mir, a couple of other people, they've done fantastic black and white photography. Really good stuff, because यहाँ पे sync sound film बनती है. I, you know, sound recorded, although it was not on magnetic tape. Right. It was on film, जिसकी quality थोड़ी सी inferior है, because the film has to be processed and developed, and then वो sound उसकी magnetic tape की ज़्यादा superior quality sound की. So like, but the system was, you know, basically correct कि भाई ये sound record होनी है, edit होनी है, etc, sync होनी है, tracks बनने हैं, mixing बननी है, so on. So I remember कि इधर एक ग्रुप बैठा हुआ है म्यूजिशियंस का, उनके ऊपर एक माइक लगा हुआ है, एक इधर ग्रुप बैठा हुआ है म्यूजिशियंस का, इधर मैडम नूरजहान, मैं बच्चा उधर खड़ी हुई है, नॉट इवन इन अ बूथ, दिस साइड माइक लगा हुआ. और मिक्सर भी, you know, like was not like the high tech mixers we have right now, and but it was perfect because these guys were musicians. They were not shysters. Like अभी जो electronic music है, उसकी एक buzz है. Electronic music, and there's always a buzz.
करके something. I mean, you know, you listen to Rashid Attar's compositions or Khwaja Khurshid Anwar's compositions, Rafiq Ghaznavi, Master Inayat, etc. पुराने जो musicians थे सारे के सारे, you will hear every single instrument, melodies के अंदर, you know, every single instrument. जिस तरह dialogue होता है, लफ्ज होते हैं dialogue के अंदर, beautiful stuff. That skill has gone. ये डेवलप नहीं हुआ. ऊपर से गवर्नमेंट थी oppressive. Every government was oppressive. भाई आप क्यों कंट्रोल कर रहे हैं फिल्म को? What right you have to control raw stock? यहाँ पे इसका कोडेक का दफ्तर था, यहाँ पे उनका क्या उसका नाम था, मैनेजर था अपना. He was an English guy, and I forgot his name already, but he was, you know, very active in the local film industry and stuff like that. And I remember that when they actually, ये मुझे बाद में चीज़ें पता चली थी, they shot Bahani Junction here, MGM, because उस ज़माने में ये होता था कि यहाँ पे सारी जो फिल्में जो मेजर्स थे, जो अमेरिकन स्टूडियोज मेजर्स, आई.ई., MGM, पैरामाउंट, कोलंबिया, दिस दैट एंड द अदर, वो सारे के सारे उन सब की फिल्में यहाँ पे चलती थी एज अ मैटर ऑफ कोर्स, यू सी, विदाउट सबटाइटल्स. प्लस जो हिंदुस्तान में बनती थी फिल्में वो चलती थी यहाँ, प्लस रशियन फिल्में आ जाती थी, प्लस जापानी फिल्में आ जाती, इटालियन फिल्में आ जाती. एंड माय डैड विथ व्हाट यू कॉल प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, they had actually established a professorship, a film society, government college, which had so सारी की सारी जो थी ये for instance silent classics. By age 13, I'd seen them at government college film society. I was just amazing, you know, because लोगों को आज कल वो इधर जाओ, YouTube पे जाओ, फलानी पे जाओ, फलानी पे जाओ, you know, just seeing them on the big screen, the sound system, etc., etc. It's a different experience. Totally, because that's just a movie. So ये फिल्में चलती थी in addition to whatever was produced here. इतना rich culture, Salman Rich साहब. because it was a cinema-going culture. Right. For a society to actually to have a movie industry, a successful film industry, you have to have a cinema-going culture. Yes. यहाँ पे लोग मूवी देखने जाते थे. Families जाती. Families जाती थी, exactly. और as a matter of interest, लाइन बनती थी हर चीज. बस स्टॉप पे लाइन बनती थी, रेलवे की टिकट के लिए लाइन बनती थी, मूवी की टिकट के लिए लाइन बनती थी. सारे कमिश्नर, एडिशनल जज, मज सारे लाइन के अंदर खड़े होते थे अपनी बीवियों के साथ टिकट लेने की. वो गाड़ियों पे झंडे लगा के नहीं आता था. फॉर इंस्टेंस मैं साइड में ये भी बात बता दूं ना, ताकि यू नो जस्ट यू हैव द काइंड ऑफ लाइक द डेप्थ ऑफ फीलिंग, बैकग्राउंड एक्शन. तो लाइक द थिंग इज दिस के मसला ये है कि यू नो फॉर मेकिंग मूवीज यू हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ लाइफ. एक तो उसका टेक्निकल मसला तो है ही फिल्म नहीं, लेकिन सलमान साहब जो फिर मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आई उसके बाद उसने जो है वो फिर ये सारा एक डाउनफॉल एक ऐसा शुरू हुआ कि they working on bloody British laws. वो प्रो कॉलोनियल टाइम के कानून चला रहे हैं. बैन कर दो इसको, बैन करो. मेरी 2 फिल्में बैन हुई, ब्लड ऑफ हुसैन बैन हुई, आज तक नहीं चलाने दी फिल्म. मेरी फिल्म नहीं चलाने दी. जो बड़ा गर्क हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा कुछ चक्कर चला. आजकल तो बड़ी एडवांटेज होगी बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया. You can actually run a campaign, orchestrate this, that, and the other, and so on and so forth. And you know, but the thing is this के I mean सेंसर क्या चीज़ है यार. सेंसर I mean ठीक है, अगर आप ओपन कोई कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, या चाइल्ड सेक्स दिखा रहे हैं, या आप कोई कत्ले, अब वो मेरा मतलब है कि कोई मैसेकर हो गया, ब्लड उस तरह दिखा दिया, या कोई वायलेंट हो गया मामला. I mean you know let the people grow. नहीं, उसमें भी देखिए ना सलमान साहब, देखिए उसमें भी ये है कि आप ले डाउन कर देना. अगर आप सेंसर बोर्ड हैं तो आप बता दें. सेंसर होना ही नहीं चाहिए. आई मीन इंग्लैंड में काफी सेंसर होता था. मेरे जैसे हमको तो नहीं पता होता था, बट लाइक यू नो एज अपोज टू अमेरिका में था सेंसर कोड थी सारी. कोड कहते हैं उसको. ये हावर्ड हॉक्स क्या इसको कहते हैं कि ये ना हावर्ड हॉक्स एज अ डायरेक्टर,
ये क्या उसका नाम है यार, वो काफ़ी मशहूर जो था वो एंटरप्रेन्योर एंड फॉरगेट हिज नेम, इसकी मूवी भी बनाई थी मार्टिन स्कॉर्सेसी ने। एनीवे, सो वे बैक इन द 40s आई थिंक वो कोड के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ था अमेरिका with Jane Russell starring in a movie called Outlaw. वही सेंसरशिप थी, वहाँ जो सेंसरशिप खत्म कराई इंग्लैंड में आज तक it's controlled. England is a kind of there's a kind of but I mean like censorship in a country in these countries. Why censorship is a killer. Censorship is basically telling you saying the first that there's no progress. You are not allowed to progress. That is what censorship means. आप तरक्की नहीं कर सकते. Period. I mean, what is this? Literature censor कर दिया, उसको बंद कर दिया. Who decides? Why? Who? I mean, then it's very easy to actually bring religion. हमेशा ये चक्कर चलता है. साडे हुसैन पे ये चक्कर चला यार. तो जी इमाम हुसैन दिखाओ यार, फिल्म देख लो पहले, फिर आप जाके उसके बाद में जो I mean, if you want to say something against the film, go and say it, but go and see the damn thing. Yeah, watch the movie and then have your critical point of तो view. किसी Why को not? गन पॉइंट पे तो नहीं ले जाता आदमी फिल्म दिखाने. Yes, true. इधर वो तो एक दूसरी फिल्म चल रही है इस मुल्क में, where actually the entire population is in a goddamn movie. लेकिन सलमान साहब ये देखिए against ना, their choice. कोई फिल्म में ऐसी चीज नहीं होती जो कि माशरे में नहीं हो रही. सब कुछ हो रहा है. आप ऐसे ही जितना मर्जी कह लें कि जी हम बड़े इज्जत वाले लोग हैं, हम बड़े ये हैं, हमारा जो बंदा माशरती ज्यादा इंसिस्ट इक़्तिदार करता है ना, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं ये हूँ, वो इज्जत वाला है ही नहीं. जो एक्चुअली इज्जत वाला आदमी है वो कभी जिक्र ही नहीं करेगा. हाँ, वो जी हमारी माशरती इक़्तिदार, ये कौन सी माशरती इक़्तिदार यार, आपको पता क्या है कि यहाँ पर होता क्या. एनीवे, Anyhow. वो एक अलग सिलसिला. बट द थिंग इज कि हमारी जो इंडस्ट्री है जी इस जी टाइम, मतलब उसका एक बहुत बड़ा इशू है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. स्टूडियोज बर्बाद हो गए हुए हैं, स्टूडियोज का कोई आई काम नहीं मीन है. इन्होंने फ्यूचर क्या है सलमान साहब, वो हाउ डू फ्यूचर यू ये फील? फ्यूचर रेस्ट विद द यंग पीपल हम्म. एंड also the state has to facilitate that. It may make it easy for people to develop. Just move themselves out of it. Government का कोई काम नहीं है इन मसलों में इन्वॉल्व होने का, other than making things easy. i.e. के पीछे कई दफ़ा ये चीज़ें चली कि जी इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स हटा रहे हैं, फिल्म के ऊपर टैक्स देखें कितना लगाया हुआ है फिल्म के टिकट के ऊपर. जी जी जी. That's ridiculous, nonsensical. I mean, cinemas किस लिए बंद हुए? Because of like 50-50. एक तो उन्होंने फिल्में खराब बनाई. I mean, the hit directors were actually copying Indian films and actually making and releasing the Indian films बंद करा दी. और अफगानिस्तान जाके वो VHS लेके कॉपी करके भी यहाँ पे हिट डायरेक्टर्स बने. तो लाइक यू नो दैट इंडस्ट्री को कोई नई चीज कभी इस इंडस्ट्री के पुराने लोगों ने इनकरेज नहीं करने होने, इन्होंने घुसने नहीं दिया. They never actually I used to actually I saw this. I used to when I worked on these two films in this country as a young kid. I was just horrified. I didn't want to be here. You know, बदमाश चक्के लोग आ गए फिल्में बनाने के लिए. एक्सेट्रा, शराबें चल रही हैं, वो मुजरे वाला सीन चल रहा है, चल रहा है चक्कर. I mean, the thing is this कि you know, they never. दूसरा ये था कि एजुकेशन में नहीं था कभी, ड्रामा एजुकेशन में नहीं था, आर्ट्स के आई मीन यू नो लाइक एक्सेट्रा. And so it was the system became very oppressive from the get-go. Yes. I mean, I remember my school days से मेहमत एक टाइप की पीस थी, सारा कुछ था. But the thing is this, when you actually try to do things here, they were you know, so police state के आगे से ये जगह हटी नहीं. It just remained and now it's become the worst of the police states on planet Earth. ये सलमान साहब, ये जो बात है ना, आई थिंक ये बड़ी मेन बात है कि हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हम एज इफ कोई ऐसी सोसाइटी में हैं या हम कोई ऐसे लोग हैं जो कि आर्ट्स और क्राफ्ट और आर्ट फॉर्म्स को बड़े कोई
कदर की निगाह से देखते हैं या अप्रिशिएट करते हैं या चाहते हैं कि यहाँ पर वो फले फूले। दैट्स नॉट द केस। हमारी सोसाइटी में कोई भी गवर्नमेंट्स को देख लें, स्टेट को देख लें, लॉज को देख लें, इट्स जस्ट आप मुझे डिस्करेजिंग। बता सकते हैं कि आपके जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं यहाँ पे, जो मुल्क का मुस्तकबिल एक लैब से कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि जो आजकल डांग छोटा हुए हैं, तो उनमें से कितने लोग कल्चरल एक्टिविटीज पे जाते हैं जस्ट एज अ मैटर ऑफ कोर्स? आर्ट एग्जीबिशन देखने चला गया, कोई थिएटर प्ले देखने चला गया, कोई मूवी देखने चला गया, एज अ रेगुलर पर्सन। नॉट कि आधी पुलिस खड़ी हुई हो। मेरी प्रोडक्शन थी यहाँ पे, मैं अमेरिका से कंपनी लाया था विद अमेरिकन एक्टर्स वर्किंग शो हियर, जब हमारे थिएटर फेस्टिवल हो रहे थे इधर, और टेल हार्ट की, वो गवर्नर साहब आ गए, वो सारे अटेंशन हुए हैं जी, गवर्नर आ रहा है, गवर्नर आ रहा है, गवर्नर। तो मैं कहा यार प्लीज प्लीज टेक द गवर्नर टू सम अदर शो, मेरे शो पे ना लाए। मैंने अपने भाई से कहा, मैं कहा यार क्यों मेरी मेरी कम परफॉर्मेंसेज हैं, सारी परफॉर्मेंस मेरी उड़ा दे। ऑडियंस बाहर खड़ी हुई है, एक बंदे के लिए उसके साथ जो एंटोराज आया अंदर। मैंने पूछा, मैंने कहा कि पुलिस बैठी हुई है साथ, इसका क्या काम है? वो देख रहे हैं लड़कियों की टांगें स्टेज के ऊपर खड़े बैठ के। But the thing is, this official situation is just like, I mean, they just, so they arts को मर्डर किया हुआ है इस कल्चर। True. So they have to butt out of it and leave it. They can't get to grips with the fact that society has changed. उनको इनके दिमाग में नहीं पड़ रहा कि चेंज हो गया, ये जो नई जनरेशन है, चेंज लोग, ये नई आपकी लेंगे। So I mean, deal with them. Yeah. Otherwise, they're going to actually wipe you out. I mean, that's. I just fail to understand how they can't see that. So the government or the state, they need to take a step back, let the industry prosper, और जो भी एक evolution भाई का इंडस्ट्री process है किधर? वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुझे बताया ना कौन सी इंडस्ट्री, उसको जो भी बनने के लिए सपोर्ट किया जा सकता है, चार बंदों ने अपनी बनाई हुई है कोई इंडस्ट्री कराची में। हाँ जी, बिल्कुल यही है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी नंबर, नोबडी हैव आस्क्ड मी। यस, मेरा मतलब है कि मेरी तो सारी जिंदगी इशू है सलमान साहब, ये लाहौर कराची आई डोंट इवन नो, सारा कुछ मूव हो गया कराची। हाँ, तो ड्रामा भी मूव हो गया, फैशन भी मूव हो गया, फिल्म भी मूव हो गई है। ठीक है, बट द थिंग इज दिस दैट सो कहने का मकसद ये है कि दैट्स द वे इट इज। या जो कुछ भी है वो हो रहा है। आई मीन लाइक दैट्स द वे इट इज। So Salman साहब, at the end, please tell us के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स वगैरह, what are you working on, क्या आप करना चाहेंगे, how do you want this industry to shape up, जिसमें आपका क्या रोल आप देखते हैं? यार मेरा तो इस इंडस्ट्री में कोई रोल नहीं, बिकॉज द थिंग इज दिस दैट ये आई डोंट इवन नो व्हाट द इंडस्ट्री इज एंड वेयर इट इज। तो कराची में होगी कहीं, मैं कराची जाता नहीं हूँ, and I am actually working on a couple of projects. वो मेरे दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, right, and that's एक रेगुलर प्रोजेक्ट है। okay, and काम तो मैंने सारी उम्र यही किया है जी, of course, I don't know anything else। जी 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 जी। and this is a good time of my life because I have all the experience, yeah, that needs has kind of gelled together, and I need to put that out and things like that, but things are difficult, problems है। अब ये करंट सिचुएशन जो गवर्नमेंट की बहुत इंटरफियरेंस है, basically it's telling government should not be playing, there should be no censorship and things like that। True। And censorship should be very kind of like बड़ी स्पेशल चीज कोई होगा, लोगों की माइंड सेंसर कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? आई मीन बहुत ही ये एक रिग्रेसिव किस्म की चीज। Yes, it's a very regressive approach. Unnecessary. Absolutely. And it creates space for exploit. Jealousy is unfortunately a very kind of like plays a very major part in this society. People are jealous of people getting successful. Very kind of successful people are jealous को यार ये बंदा को आगे मत आने दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो।
leg pulling हर is a जगह पे major होता है, बट sport in यहाँ पे जरा Pakistan. ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर ज्यादा है. कुछ बंदे ऐसे हैं यहाँ पे, वो है ना उसका एक किरदार कैरेक्टर शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर, बॉटम, he wants to play every character. He says let me play the lion too. तो एक लायन होता है, उसको कास्ट किया, वो कहता है कि मुझे लायन भी प्ले, आई रोर लाइक नो अदर लायन हैज रोर्ड बिफोर, और ये मुझे ये भी प्ले करने दो. सम कैरेक्टर्स आर लाइक दैट, दे वांट टू डू एवरीथिंग, they want their face everywhere, you know. हैं लोग, and you know, and they're kind of like, you know, and they're jealous of other people and so on so forth. बड़ी ये बड़ी एक predominant चीज है इस माशरे, पूरे माशरे की, Yes. not just in the arts business but in the society overall. Stealing people's stuff, ideas, this, that, and the others, you know. Love it. But ये कोई चीज successful होती है, you should be happy. Yes, absolutely. Because, you know, like, be magnanimous, be Yes, happy, yes. good for somebody, like, you know, they've succeeded. It's and especially if they're from your soil. Yes. And especially in the field of arts, in cinema and literature and things like that. तो वो डिवाइडेड सी जगह, तो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं जो कि आपकी आपकी जो जो आई एम सॉरी, आई एम गोना से थिंग्स दैट पीपल माइट नॉट लाइक, बट यू नो, टू हेल्प विद दैट, यहाँ पे जो आपके जो पढ़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको खुद ये काम नहीं आता. So how the hell are they supposed to teach somebody how to make movies? You tell me that. I mean, you know, वही उसका हेड है, उसकी हेड लगी, वो भाईजान, अगर आपने कोई प्लम्बिंग करानी है किसी, तो प्लम्बर को उसको उसको काम तो आना चाहिए प्लम्बिंग. मूवी तो बनाई हो, तो आगे आपकी वो ट्यूब ब्लॉक ना हो. सेट पे काम तो किया हो. अभी people who have never fucking worked in this business are teachers. So how the hell are you supposed to actually develop an industry? यहाँ पे ये रिवाज चलता है यहाँ जी. और मेरा मतलब है कि यहाँ पे ये है कि जो सक्सेस किस तरह से हो जाए यहाँ, और अगर कोई बंदा जेन्युइन सक्सेस होता है तो उसकी टांगें खींच, हाँ, उसको कोशिश करें कि वो हो ही ना सके. तो व्हाट इज दिस यार, क्या चक्कर चलाया हुआ भाई? अगर आपको मूवी पसंद नहीं आ रही तो आप ना देखें, मत देखें. आप बल्कि उसके बारे में देख ली अगर आपने, तो जाके बात करें. यू हैव योर, अगर आपने उसके अगेंस्ट तबसरा करना है, जाके करें. हाँ, बिल्कुल करें. तो बट मेरा मतलब है कि वो फिल्म जो है आपको किस तरह मजबूर कर सकती है. once you're sitting there watching that movie, it can't make you into a extremist, it can't make you a liberal, it can't make movies you, do have an effect. of course it does, but the thing is, that's true. I mean, they do have an effect. A powerful film will have a powerful effect. Fashion change हो जाते हैं. I mean, if the girl is wearing something or the guy is wearing something, you know, if the hero is a kind of thing. ये सारे इधर के हीरो मोस्टली आप बॉलीवुड बजूकस and you know, pretend tough guys kind of thing and so on and so forth. And अजीब-ओ-गरीब किस्म का सिनेमा है. So once a cinema starts to emerge, which is actually a cinema from you know, from your life in this country, yes. instead of actually celebrating it, उसके आप खिलाफ कैंपेन शुरू. बिल्कुल. That's not fair. That's not fair. True. And it's not fair not just to the people who've actually made the piece of work hard, but it's unfair to a lot of other people. Absolutely. Because लोग चीजें देख के इंस्पायर होते हैं. जी. If somebody sees something very interesting, a young person sees कि fascinate हुई, तो it's good for people to actually draw inspiration from their sources rather than draw inspiration from an alien source. Absolutely true. तो वो उस माहौल को आप बंद करें जी. अपनी जगह आपकी को हो ही ना, तो हर इंस्पिरेशन को वो समझने, वो इंस्पायर होने के लिए आप कोई जापानी चीज देखें या कोई चाइनीज चीज देखें या कोई फ्रेंच चीज देखें, यू नो. बट लाइक द थिंग इज दिस के ये चलता है यहाँ पे, और फिर लोग बोलते नहीं है, और फिर एकदम वो सारी की सारी जो है ना, एक्चुअली इट्स I wrote a piece about just this, the censorship business, because it's a very powerful drama. It involves very interesting characters. किस किस किस्म का किरदार भी इसमें आता है.
ये जो करने के लिए इसको सेंसरशिप की गेम किया है बेसिकली। आई मीन हुआ दीज पीपल जिन्होंने शायद एक किताब भी ना पढ़ी हो सारी, जो तारीख ना पढ़ी हो। आई मीन जर्नलिज्म आपके सामने है इस मुल्क के। नहीं, नोटिफिकेशन तो वो देखें, अभी तो सीधा सीधा मिनिस्ट्री से आते हैं ना, वो सेंसर बोर्ड्स को तो आप छोड़ दें, अभी तो होते उधर तो एट द एंड ऑफ द लाइन बंदे हैं जी ना, जी बंदे हैं ना, तो वो तो कैरेक्टर्स हैं ना हाँ बंदे। हाँ हाँ, वो तो आप आइडेंटिफाइबल हैं, वो तो तो आई सामने मीन इट इज, वन शुड मेक अ मूवी अबाउट दीज कैरेक्टर्स, है। ये भी जो सही है, चीजें इनको सेंसर करते हाईलाइट हैं। करें। वो सलमान साहब, उनकी वो भी अपनी सेंसर लाइफ कर क्या है। देंगे, वो भी तो इनकी मर्जी से बनेगी ना। But the point is this कि I mean किधर जा रहे हैं। I mean फिल्म इंडस्ट्री अब मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क की फिल्म इंडस्ट्री जिन लोगों की फिल्म इंडस्ट्री है दे शुड कमेंट। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द नहीं, फिल्म you इंडस्ट्री made your बिकॉज point, you made your point with that. लाइक इट्स नॉट आउट ऑफ चॉइस, बट मैं तो जाके किसी के डोर स्टेप पे बैठने वाला नहीं, यू नो। Yeah. एंड द थिंग इज दिस, आई हैव सीन a lot more than they will see in the next 3 lifetimes जो philosophers बन के बैठे हो। तो बाकी ठीक है, it runs नहीं, and thank you so much for your inputs today. आपसे जो हमें सीखने को मिला, जो देखने वाले हैं, जो वो आपसे जो चीज़ें सीख सकते हैं, जो हिस्ट्री है, जो रियलिटीज़ हैं, वो सबके सामने हैं, और उनको समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, उनको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये हो नहीं सकता कि हम किसी वो इल्यूजन में रहें। तो सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आई thanks, होप कि आप आइंदा भी हमें जॉइन करते रहेंगे और that'll मुख्तलिफ be my इश्यूज़ पे pleasure। Yeah, हमारे साथ गुफ्तगू करते yeah, रहेंगे। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द thank you। दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।